Friends, good afternoon. This is your second class of your G paper Computer Fundamental. In your last session, we had to differentiate in between data and informations. I hope you understood what the difference between data and information. Today, we are going to discuss about the different part of computer system. The entire computer system is divided into four parts, or you can say 4 units. One is very popular, that the CPU, central processing unit. Second unit is that the input unit, and third unit is output unit, and last one is memory unit or storage unit. Here we inserted the data into the CPU, and student, as you know, CPU is known as the processor. Because of CPU is responsible to process something to give you the result. You inserted your data into the computer system and you expect the information from the computer. And this data is converted to information by a concept, and that concept is the processor, and which is popularly known as CPU. Its name is Central Processing Unit. At first, we are going to discuss about your input unit. Look at this picture. Here, diagrammatically, can write this is the CPU, we can say, and here one unit, that is input unit, and here you can find the output unit. And also here is there is another unit, that is storage unit, or you can say SU. Okay. Now we are going to discuss about this input unit. Input unit एटी इंटराक्ट करुच्ची CPU सहित, then CPU you can get communication in between CPU and storage unit, and another communication media is here. Computer communicate with the output unit. Okay. Now CPU is further divided into ALU part, ALU and CU. Okay. This is CU, control unit, and here is the ALU, ALU. Okay. You can find here the register. ता विषय में परे जीवा register. Okay. Register विषय में आज पढ़े ना. Register is our next topic. Today focus on input unit and output unit. Overall mechanism I am going to make you understand. Input unit, where we insert the data, we enter the data into the computer system. The input unit allows you
input unit is a platform where you enter the data to the computer system. So for computer system, you can insert, you can feed the data into the computer through the input unit. Its name is input. Input unit is the collection of some input devices. Here questions arise, what is input devices? Input unit is the collection of some input devices. Input device. Input device is a device, input device is a hardware part which is used by the user to enter some data into the computer. So here is the user interact with the input unit. The input unit is the media which allows you to build up a communication in between the user and machine. Here user and this is the machine. The input unit is the interface in between the man and machine. In between man and machine, the interaction can be possible by this input unit. Okay? The input unit is a media, input unit is a bridge, input unit is a via through which man can interact with the machine. User can intervene with the machine. User can create a communication. User can build up a communication with the machine by the help of this kind of devices, and these devices is known as the input devices. Input device is a hardware device. Input device is a hardware part which is used to insert the data into the machine. One example I can give you, that the keyboard is a input device. Okay, the keyboard is used to insert the data. When you press some keys on the keyboard, at that time that character, that key is transferred into the computer system, and you can see or on the monitor, or you can say that the pressed key is displayed on a hardware part. That hardware part is the monitor which comes under this category. So now input unit or input devices are the devices which are used to insert the data, and collection of such kind of devices create a unit, and that unit is the input unit. The input unit, you can say, input unit is the interface. Input unit is the interface in between user and machine, in between user and CPU. It is the interface. Why the interface? The interface allows you to interact with someone. Interface is a media, interface is a bridge. गोटे पोल जोटा आम कहते ब्रिज, गोटे पटू आउ गोटे पटू जावाई, गोटे पटू कम्युनिकेशन बिल्डअप करने. Okay, that is input unit. Now come to the point output unit. Here input unit आपको कुछ example दे परिया. Keyboard is the input unit, mouse is the input unit, your scanner is the input unit. Using the scanner, you convert your hard copy into the soft copy. Your document is inserted into the machine. Your document, soft copy of your document is inserted into the computer system by a device, and that device is the scanner, and scanner is under this unit, that is the input unit. The input unit examples, that's the keyboard, mouse. I mean, देउचे example दोचे. One is keyboard, mouse, mic, microphone. Okay, scanner. These are the examples of input devices. And input, this collection of all kind of input devices
comes under a category, and that category is known as input unit. You can say integration of this devices create a unit, and that unit is the input unit, and input unit allows us to enter something into the computer system. That's all. Now focus on the output unit. When you insert the data into the computer system, ultimately you expect something from the computer. That's why we inserted the raw data. We expect the result. Your desired result will be displayed, or you can get your desired result through some devices, and that devices is known as the output devices. In other words, you can say output device is a media, output device is a medium, output device is a bridge on which computer can communicate with the user. The computer can communicate with the user, or you can say machine can interact with the man by the output unit. Output unit. So here you see the interaction between man and machine is performed by the input unit, and interaction between machine to man is performed by the output unit. So you get your desired result. The man or user can get his result via some devices, and that device is known as the output devices. That's a very first example is that monitor. It's most popular example. Monitor is a device where result is displayed. Whatever you inserted into the computer system starts its processing. After the completion of the processing, processor or CPU, and CPU is known as the processor. The processor, after the completion of its processing, processor forwards the result to the output device, that's the monitor, and that result is displayed on some hardware device, and that display unit is known as the monitor. The monitor is a interface in between machine and man. Monitor is a interface in between your computer system, its CPU, and the user. So that's why you can say output unit also plays a role of interface in between machine and man. Input unit is the interface in between man and machine, and similarly output unit is the interface in between machine and man. Reverse direction data flow is not possible. You should keep in your mind, you should remember that reverse direction data flow is not possible. Look at here. You can find the arrow mark in both directions, but here there is a single arrow mark. It means that, it defines that there is a unidirectional data flow. Unidirectional data flow, it means that there is no data flow from the CPU to input unit. Have you ever seen any kind of data flow from your computer to keyboard? Always the data flows from keyboard to computer. Reverse direction data flow is not possible. It means that I'm going to talking about the data from the computer to keyboard. It is not generally happened. It is not possible. That's why data flow in between the input unit to the computer and computer to the output unit is a unidirectional data flow. That's called as unidirectional. Unidirectional data flow. Single direction. Reverse possible nuhe. Okay. जदि कौन सी तुम डाटा देखुच मॉनिटर डिस्प्ले होची, ओके, पुणी मॉनिटर रु कौन डाटा पड़े कि कंप्यूटर को प्रोसेसर को इमिति जाएनि. कंप्यूटर बा प्रोसेसर जहाँ प्रोसेसिंग करे से डाटा गुड़ी मॉनिटर डिस्प्ले करे. तुम कीबोर्ड जहाँ देल बा माउस रे जहाँ इंस्ट्रक्शन देल बा तुम माइक जहाँ नेला माइक्रोफोन यटा आम कहीपर इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस. ये जहाँ नेला मशीन को देला
ओके ए मोबाइल बा तुम मेसीन लु एटिकी डाटा आसे ना दैट्स व्हाई डाटा फ्लो फ्रॉम दिस इनपुट डिवाइस टू द योर प्रोसेसर इज ए यूनिडायरेक्शनल रिवर्स डायरेक्शन डाटा फ्लो इज नॉट पॉसिबल तो से जो कैमेरा बा मोबाइल लु डाटा ए माइक पाखु आसु ना ओके तुम्हें बर्तमान जहाँ मोबाइल देखुच योर मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस मु जहाँ कहूँ ए डाटा इज इंसर्टेड इनटू द मशीन एंड मशीन फॉरवर्ड्स द डाटा टू योर machine and that data is displayed on your monitor and here the monitor is the output device तुम मॉनिटर तुम जहाँ देखुच सेटू डाटा आसिक एठी मशीन ला पहुँची पारियोनी जदि आसुचे त डिफरेंट मेकानिज्म इज देयर ओके तले हियर इनपुट यूनिट is interface between user and machine or you can say man and machine and output unit is the interface it is builds a communication in between machine and man and some examples of output devices is monitor printer okay speaker this is the output device तुम्हें बर्तमान जो इयरफोन दे जो कान रे गेंजी तो जहाँ सेटा गोटे आउटपुट डिवाइस एटा मु जो देचे दैट इज इनपुट डिवाइस ओके तो हियर मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर इज द व्हाट आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस कहले कोन बुझाए डिवाइस इज ए मशीन डिवाइस इज ए नोड डिवाइस इज ए हार्डवेयर पार्ट which is used to perform a job to perform a work that is the device and the device which is used to forward the data to the user which is used to extract the data to get the data from this to fetch out the data from this CPU to user and that device is the output device so you can say user use this kind of devices to fetch the data to retrieve the data from the CPU or from the processor and a collection of these devices creates a unit that unit is known as output unit look at here one is scanner one is printer what's the difference one is scanner one is printer difference controls the scanner converts hard copy into the soft copy and printer converts soft copy into the hard copy तो व्हाट डू मीन बाय सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी स्कैनर कौन करुच्ची स्कैनर कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी सॉरी हार्ड कॉपी इनटू द सॉफ्ट कॉपी मुझे लिखि पारुछि एठी सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी द स्कैनर कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी टू द हार्ड कॉपी सॉरी स्कैनर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी to soft copy the hard copy which is tangible which is touchable you can hold a document you can hold your certificate that is the hard copy which is touchable you can touch and feel such kind of you can what आमे जो कोई जोंती आमे धरी पारछंती you can that is the touchable holdable okay that is the tangible the hard copy is touchable you can hold that copy with your hand and this copy is converted to the soft copy कहले तुम जो स्कैन कर सारा परे तुम सर्टिफिकेट रो जो इमेज टी हमें मॉनिटर देखुछंदे that is the soft copy generally soft copy is not touchable it is tangible in nature intangible in nature what is intangible this is tangible hard copy is tangible this is touchable and soft copy is untouchable or intangible so here scanner enters your document into the CPU and printer converts soft copy to hard copy soft copy रो hard copy convert करछि के printer okay that's why printer is a output device and collection of this kind of output devices create a unit that unit is the input
unit. Is it okay? So finally you can say input unit is a interface. Input unit is a communication media in between user and machine, and output device is an interface or a communication media in between machine and user. That's all. Okay. Now come to the point, that is CPU. आमे ये बाबद रे डिटेल्स जीवा डिफरेंट काइंड ऑफ कीबोर्ड माउस भी डिफरेंट काइंड ऑफ माउस अच्छी हाँ स्कैनर भी गुड़ाए प्रकार अच्छी ओएमआर सब रोची ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन गुड़ाए प्रकार स्कैनर अच्छी मुझे तुमको नोट दे देवी से पीडीएफ फाइल दे देवी तुम देखिबो हैला या पर डिटेल्स मु बुझेबी आज गोटे ओभरऑल गोटे स्ट्रक्चर तुम बुझाऊँ जे कंप्यूटर को भाई भाव में काम कर कंप्यूटर कौन कौन सब पार्ट अच्छी गोटे ओभरऑल आइडिया तुमको दूँ. कम टू द पॉइंट CPU, that is central processing unit. Student, its name is central processing unit. It doesn't mean that CPU is placed physically in between your input unit and output unit, or your input device and output device. Here CPU, your processor is not situated, is not placed in between your input device and output device. Okay. But logically you can find the position of your processor or position of this CPU in between the input unit and output unit in workflow point of view. जब आम गोटे कार्य करुँच काम धारा दृष्टिकोण आम देखा देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जे तुम यूनिट इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट मझे अच्छी लॉजिकली गोटे कार्यर धारा दृष्टिकोण गोटे वर्कफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू कैन सी then you can find the position of CPU in between input unit and output unit, but physically generally CPU is not in between the input unit and output unit. बेले बेले थाई पारे न थाई पारे तो देखियो तुम कंप्यूटर मु एग्जांपल दउची जे कंप्यूटर में मॉनिटर टा रखले डेस्क ऊपर ओके कीबोर्ड टा पाखरे अछि तुम जो डिस्क बोली कहते हार्ड डिस्क बोली कहूँ प्रोसेसर बोली कहूँ सेटा कौन से मझा मझी थाए कि सेटा गोटे साइड में रखी था कि कार्यर धारा को आम देखा ये कीबोर्ड जहाँ आम टाइप कले दैट इज गोज टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पुणी मॉनिटर पाखु आसला ओके तेणु एभली जदि वर्कफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू आम देखा ताहले लॉजिकली CPU इज इन बिटवीन योर इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट लॉजिकली दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंटर अच्छे तुम फिजिकाली भाव जे फिजिकाली आम CPU टाक या दीटा मझे रखा से कथा नहीं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is also known as the processor which is responsible to process your input device your data and give you your desired result. The CPU is responsible to execute something. Execution is happening. Execution is occurred inside the CPU. And CPU is responsible to convert your input data into your output information. You insert your raw materials here. Through the input unit, you enter your raw material to the CPU. And after some mechanism, after some work, after some processing, after the execution, central processing unit processor gives you the product through the output unit. Okay, मु गोटे एग्जांपल एठी दउछि मु बर्तमान टेम्पररी मु रजिस्टर टाको ओमिट करूछि ओके केवल कनेक्शन रहउछि इस
CU ALU आउ SU उपरे रोचे ताको आमे कोन कहउछन SU स्टोरेज यूनिट बा MU बोली कह जाय ना कि मेमोरी यूनिट बोली कहि परिया गोटे एग्जांपल मु देली कौन ना यूजर कीबोर्ड रे प्रेस कला कौन 2 आउ 3 ओके आउ 2 + 3 यूजर कीबोर्ड रे एंट्री कला ये गुटे रिसीव करियो प्रत्येक इनफॉरमेशन गुटे बा प्रत्येक डाटा गुडी को कंट्रोल यूनिट ही रिसीव करियो कंट्रोल यूनिट is the traffic police inside the computer system. Control unit controls and coordinates all the units which is known as the peripheral unit. Control unit या चारिपट जिते भी peripheral unit अच्छा like input unit, ALU, MU, आउटपुट यूनिट ये टोटल यूनिट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करूछ के कंट्रोल यूनिट्स दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स पेरिफेरल यूनिट्स एंड कंट्रोल यूनिट्स आल्सो कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो को आडू डाटा कोठी के जीवो दैट इज आल्सो मैनेज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट्स तो यही एग्जांपल को लेके जाए प्रथमे तो 2 and 2 3 एवं ऑपरेटर आम देले क्या प्लस ये दुटा को आम ऑपरेंड कहवा 2 and 3 इज द ऑपरेंड एंड प्लस इज द ऑपरेटर ये कंट्रोल यूनिट रिसीव कला ओके then कंट्रोल यूनिट हियर चेक्स whether this data is mathematical data or not जदि मैथमेटिकल डाटा होची तल कंट्रोल यूनिट्स फॉरवर्ड्स दिस डाटा 2 3 प्लस टू द ALU पाखु देले ALU कौन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स ALU stands for arithmetic and logic unit and this unit is responsible to perform all kinds of mathematical, logical, statistics work or statistics jobs. All type of mathematical problem is solved by one unit. That unit is the arithmetic and logic unit. Okay, when you inserted 2 + 3, the control units at first receive this 2 + 3 and checks whether this data is mathematical or not. If it is mathematical, then control unit forwards to the ALU. And after that, after the completion of the addition operation by the ALU, the result 5 ALU कौन करियो result 5 is forwarded to the CU एथि गोटे एरो मार्क मु ए साइड के देछि अर्थात डाटा फ्लो इनसाइड द CU and ALU is the bidirectional it is not unidirectional both sides data flow is possible in between CU and ALU बर्तमान कौन है ना 2 3 प्लस जो ALU आसी एठी जो 5 टा को रिजल्ट को ये फॉरवर्ड कर देला पुणी क्या को CU को ALU एठी डायरेक्ट दे परियोनी आउटपुट यूनिट को दबो नहीं CU displays this 5 through the आमे एटा को दे परिया एठू आमे ई भले भी नहीं परिया डायरेक्ट हां एरी पठे परिया ओके बर्तमान ये कौन है ना कंट्रोल यूनिट फॉरवर्ड कला क्या ये रजिस्टर माध्यम कि सी जीव रजिस्टरटा ये बर्तमान दबार नाला मुझे रजिस्टरटा देदेली ये रजिस्टर द्वारा आस ओके डाटा आस बर्तमान कंट्रोल यूनिट आम यह भाभी पारिया रजिस्टर को बर्तमान ओमिट करी कंट्रोल यूनिट्स फॉरवर्ड्स दिस 5 टू द मॉनिटर रे डिस्प्ले आला तो आम कीबोर्ड यूज करथिले 2 and 3 को एंट्री कले कंप्यूटर एडिशन कर साला परे ALU रे एडिशन हो साला परे बर्तमान ALU फॉरवर्ड कला रिजल्ट कहा को आउटपुट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट्स आल्सो फॉरवर्ड्स दिस 5 टू द स्टोरेज यूनिट फॉर द future use it's forwards this storage unit memory unit to save this 5 to save your result and that result can be used in future तेणु memory unit आम से यूज कर
Clear है? Then here you can feel the role of the, you can understand the role of the CU. The control unit here plays a role of a traffic police which controls the direction of a data flow inside the computer system. In case of in traffic, the traffic police controls the direction of a vehicle. Okay. Similarly here, the direction of a data flow is controlled and monitored by this unit, and that unit is known as the control unit. मु डिटेल्स को जाऊने मु ओवरऑल आज बताऊँ सब कथा एगुड़ा को गोटे 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 क्लास करके सारे पड़ो इनपुट यूनिट उपर गोटे क्लास हम पुणी आउटपुट एगुड़ा सब गोटे गोटे क्लास हम तो हियर कंट्रोल यूनिट गला ALU मु तो कहली जे ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट all kind of mathematical and logical operation arithmetic operation arithmetic jeta operation ame कहउचंदी the fundamental arithmetic operation is addition subtraction multiplication and division and modulus root modulus कोन करछि modulus gives you the remainder जो भागशेष दिए तो here multiplication addition तो ये चिन्ह दियाला this is the plus and minus is for subtraction and star symbol is used for the multiplication purpose. You can use this kind of तमें हमें ये भरा करियानी क्रॉस दबा नहीं एटा को जनरली हमें यूज करछन बट इन केस ऑफ कंप्यूटर यू गिव द स्टार मींस मल्टीप्लिकेशन and a division the division slash symbol is used for division हला पर डिविजन कला पर ये कौन दउछ हमको भागफल क्वोशिएंट ओके गोटे है डिवाइडेंट आउट है डिविजर गोटे क्वोशिएंट आउट है व्हाट दैट्स द रिमाइंडर गोटे भागफल आउट है भागशेष आम यहाँ को मॉड्यूलस बोली कहवा दिस सिंबल इज नोन एज द मॉड्यूलस एंड द मॉड्यूलस सिंबल गिव्स यू द रिमाइंडर फॉर एग्जांपल आम जो दौची मु लिखुची बर्तमान कौन 1/2 आम के पाइबा 0.5 এইটা যদি মু ইউজ করুছি দ্যাটস দ্য ডিভিজন সিম্বল বাট 1 মডুলাস 2 এই জায়গায় আমি 0 পাইবা যে যেহেতু जो तार डिवाइडेंटा कौन अच्छी डिविजर ठारू कम अच्छी जदि मुझे रखी था 5 ताले एठी मु पाउछि 2.5 जदि एठी मु 5 रखिले ताले एठी आंसर पाइबा 2 एठी जदि मु 5 लउछि यार आंसर आसियो 2 एठी मु लिखुछि देखो आमे साधारणतः जता 5 रे 2 डिवाइड करछन पाउछ कोन दिस इज 1 that this one is the remainder, this is the dividend, this is divisor and this is quotient. This quotient is provided by this symbol, that symbol is the division symbol. The remainder is provided by the symbol, that symbol is what is modulus symbol. Author eta mu lekhuchi the 5/2 the result is 2 and 5 modulus 2 that result is 1 ए 1 ही दब तो रिमाइंडर आम पाँच दिस सिंबल these are called the arithmetic operator, general arithmetic operator which are used by this ALU, arithmetic logic unit. Clear? The arithmetic logic unit performs all kind of mathematical operation and logical operation. Logical operation कहले आम बुझुच कौन ये लिखुची एंड और सब पढ़ी आम जो लॉजिक रो कंजक्शन डिजक्शन पढ़ाई ना दैट्स द एंड और पी क्यू आम यहाँ कौन कहते एंड पर व्यवहार कर ना यहाँ कंजक्शन डिजक्शन व्यवहार कर ना यहाँ एंड मुझे कौन लॉजिकल ऑपरेशन एंड और ओके नॉर एक्सनॉर मैथमेटिक्स पढ़ी थो सब तो लॉजिकल ऑपरेशन +2 रे एटा सब पढ़ाई थो फिजिक्स पिला बेटर बुझी पार्थो एवं ये को यूज करके कौन कोटा फ्लिप फ्लॉप तैयार करा जाए फ्लिप फ्लॉप गेट सब तैयार करा जाए फिजिक्स रो डायोड ट्रायोड तुम देखुथो ये कथा ओके यार आउटपुट सब देखुथो एटी 0 एटी 1 जे दबा एटू कोन पाइबा एटा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तुम बुझियो एठी मु देखुची
आमे ट्रू ए लॉजिकल ऑपरेशन कौन दिए तुमको ट्रू फॉल्स ही देखो लास्ट को स्टेटमेंट कौन आसुची ट्रू फॉल्स एटा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एटा आसीबो ट्रू फॉल्स या पर एठू रिजल्ट कौन आसे एठू लॉजिक गोटे सिंपल एग्जांपल मु दउचे तापर जिबा एटा छुआ देखो हल्का टिके आमे टी सिंबल भली लागुचे एटा को आमे टी भलिया इबला ऊपर देले टी भलिया टिके देखा होचे तेणु आमे टी टा को जे दउचे ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स 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 एटा तुमको लॉजिकल ऑपरेशन आसीबो इजीली आमे मन रखू देखो ताक 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 धीना धीन धीना इज द ऑपोजिट ऑफ ताक ट्रू र ऑपोजिट के फॉल्स तन धीना धीन धीना बा धीन इज द ऑपोजिट ऑफ ताक तन ताक 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 रे ताक रहला ताक आसला ताक 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 धीना धीन सेम आसला फॉल्स फॉल्स धीन ताक धीन ताक धीन एंड धीन 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 यही भाया पर लॉजिक रो अनेक कथा को आम देखिपर बुझीपर बहुत इजी लॉजिक पेपरटा तेणु ये जो ताक 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 दिना दिन ताक दिन धीन यही दिस काइंड ऑफ रिजल्ट जोटा कि तमें गेट गुड़िक व्यवहार कराऊँगी जे इलेक्ट्रोनिक्स पेपर रे जो विभिन्न गेट सब व्यवहार कराऊँगी हाँ तुम देखिपर दिस काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय दिस ALU इन कंप्यूटर साइंस तेणु मैथमेटिकल अरिथमेटिकल लॉजिकल एंड ऑल काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स problem is solved by one unit. That unit is the arithmetic logic unit. Clear? Now come to the storage unit. Storage unit is known as SU and MU, memory unit. What does it mean? Or what's the necessity of this? You inserted the raw material into the processor and after some processing you get your desired result. It is not an easy task. Easily आम से 2 और 3 रे एग्जांपल लेली तुमको एटा इजी लागुछि किंतु कंप्यूटर बहुत बहुत बड़ा बड़ा टास्क गुडी को परफॉर्म करूछि बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम गुडी को सॉल्व करूछि एंड आफ्टर the processing after the completion of the processing you get your result in the output unit but if you don't save that result then you cannot find you cannot retrieve you cannot access this result in future for future use आमे किसी सेव करछन आमे किसी संचय करछन we save something जहाँ भी लाइफ रे तुम सेव करछ प्रेजेंट पाइन फॉर फ्यूचर यूज सिमिलरली कंप्यूटर और यूजर वांट्स टू सेव द रिजल्ट टेम्परली और परमानेंटली इन ए मेमोरी एंड दैट यूनिट इज नोन एज द स्टोरेज यूनिट तो हियर मेमोरी व्हाट इज मेमोरी मेमोरी इज द रिजर्व स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर reserved space where data is stored. The memory is a reserved space where data is stored and that data is accessible by the user at any time. Basically, especially it is very useful for future reference. The memory is further divided into two types. One is primary memory, another is secondary memory. से कथा को आम पर जा गोटे मेमोरी सेक्शन को जा या परे मु इनपुट यूनिट पाई गोटे स्पेशल क्लास नौ आउटपुट यूनिट पाई भी क्लास जीव एवं सब यूनिट को आम डिफरेंट डिफरेंट क्लास ही बुझेगा तो आज मोर जो उद्देश्य थिला जे द फंडामेंटल वर्क फ्लो the basic workflow inside the computer system. So here you can see it is the unidirectional data flow into the in between the input unit and CPU and also here is the unidirectional data flow but in between the CPU and the storage unit you can find the bidirectional data flow.
The reverse direction, in both direction data flow is possible in between the CPU and storage unit. Clear? For today's session, this much. Thank you.